इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्ते। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? कैन एवरीबॉडी सी मी एंड एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? सब लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ओके, सो व्हाट हैव वी गैदर्ड हियर फॉर? किस चीज के लिए हम इकट्ठा हुए हैं? एनीबॉडी? एनी प्रॉब्लम, एनी न्यूरोमस्कुलर हेल्थ इश्यूज? गुड इवनिंग कृष्ण सर. Volume is very low. Okay. Now it's okay. Okay. So Suman ma'am has raised her hand, so you can write in the chat box. Reshma ma'am, Suman ma'am, you can write in the chat box. Neuromuscular health issues. आज घर घर की कहानी है neuromuscular problems. Yes or no? Parkinson's. Priti ma'am writes Parkinson's. Yes, Parkinson's has also become quite a problem right from the 40s. We've got participants who have just entered their 40s and they are suffering from Parkinson's, जो 60 के बाद होता था. Yes or no? Does everybody agree with me? Yes or no? सब चुपचाप हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है. 115 participants. Okay, now I get some yes. Let's make it very interactive. Everybody please switch on your video. सब लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बातें करने में मजा आएगा, नहीं तो कुछ चेहरे भी नहीं दिखेंगे तो बातें किससे करें, समझ में नहीं आएगा. राइट? So how many of y'all are here to understand what you can exactly do to get out of your neuromuscular health conditions? कितने लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर अष्टांग चिकित्सा है क्या? हम कैसे निकल सकते हैं अपने करंट कंडीशन से? People who have raised their hands, will take up your questions, don't worry. It will be in the last part of the webinar. Okay, if there's any other issues you can write in the chat box, no worries about that. Okay, तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अष्टांग चिकित्सा के बारे में जानने के. सो अष्टांग चिकित्सा क्या है? कोई पुरानी पद्धति है, तो उसके बारे में जानने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देना होगा. Do I have your permission to share the screen? Yes or no? क्या आप मुझे परमिशन देंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए? Please write in the chat box. Yes or no? Okay. So just give me 2 minutes and I will share the screen. Is the screen visible? Ashtaang Chikitsa online? Just a sec. Yes, it's visible. Ashtaang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Ashtaang Chikitsa में हम क्या करते हैं? Namaste. I welcome you all to Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So in today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Just a sec. Anilji, can you see the screen? Anilji? Yes, it's okay now. Okay. Now I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhu ji, a rare Kumbhak yogi and a human exponents expert. Swami Rajvibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US.
So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. इन सब diseases से आप एक चीज नहीं होता है. तो इन सब चीजों से रिवर्सल स्वामी जी वो अपने ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक के द्वारा. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So what do we mean when we say structure of the human body? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? ये webinar आखिर है किसके लिए? People who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. जो लोग खुद के हेल्थ का खुद ध्यान रखना चाहते हैं and are willing to work on themselves to come out of their health problems. आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं और उससे निकलने के लिए आप जी तोड़ प्रयत्न कर सकते हैं. So reversing Neuro Musculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. Freedom from pain and medicine. Balancing of body at 8 levels. तो क्या है ये 8 शरीर? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति एंड विकृति शरीर. तो नाम कुछ अटपटा लग रहा है, ये किस तरह के शरीर हैं? तो इन सब चीजों के बारे में आपको स्वामी राजविभू जी, just after my screen sharing, you will hear from him what exactly are the 8 softwares जिससे हमारा शरीर बना है. तो न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स में मेनली हम लोग प्रकृति और विकृति शरीर के बारे में बात करते हैं. प्रकृति यानी कि इंटीग्रेटेड बॉडी और विकृति मतलब डिसइंटीग्रेशन. ओके, तो डीजेनरेशन जो होता है एक एज के बाद डीजेनरेशन शुरू हो जाती है सेल्स की. सो दैट इज द विकृति शरीर. और रीजेनरेशन फैक्टर जो है वो प्रकृति है. तो अभी होता क्या है, जब आपको पेन सरफेस पे आता है, सो द imbalances between the degeneration and the regeneration is so much that the pain, inflammation, stiffness, everything surfaces. तो उसको जब आप बैलेंस कर लेंगे उन फैक्टर्स को, रीजेनरेशन एंड डीजेनरेशन. डीजेनरेशन तो होना ही है, बट रीजेनरेशन अगर फास्टर होता है तो डीजेनरेशन का आपको पता नहीं चलता है. यानी कि आपको दर्द नहीं होता है, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, स्टिफनेस नहीं होती है. सो अष्टांग चिकित्सा heals lot many things. A few of them which are common problems which are being suffered by people have been listed here. तो उनमें से क्या है? knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatic arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, and nerve issue. So let's hear from Swami Rajvibhu ji about what exactly we need to do to get out of our current condition. Thank you so much for patiently hearing me about what exactly Ashtang Chikitsa it is in gist. अभी आपको डिटेल्स के बारे में पता चलेगा. 8 शरीर आप कैसे उन पे काम कर सकते हैं. So I'll just give you a brief as to how we will proceed in the webinar.
पहले आप स्वामी राजविभू जी का वीडियो देखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स हम बताएंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वामी राजविभू जी आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए खुद लाइव आएंगे टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर, नेम, सब कुछ लिख सकते हो, प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, विच आई माई सेल्फ विल बी कॉलिंग आउट इन द एंड। सो पेशेंटली आपको रुकना पड़ेगा टिल द एंड टू गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर। So thank you so much for listening to me patiently. Over to Anil ji to share the screen. Thank you so much. Okay, just give me 2 seconds. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम.
because there is a kidney problem, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटने का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा. Lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. ओह, इट बिकम्स डिफिकल्ट. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट. ये अलग नहीं. सो योर बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव्स टू लिव. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? सो देयर इज something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यूज जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं.
after a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as Vikriti and production is called as Prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of Prakriti and Vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of Prakriti and Vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath.
If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as kaudi. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. नाभि, kaudi, nale. Now if your navi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम कर रहे हैं, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा.
अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट, खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने? इवन इफ यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now, let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक. 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे?
Should we do a little experiment? एक experiment करें? Now keep your left palm like this. अपने बाईं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. Push कीजिए. जोर से push कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप create करेंगे, जो strength पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो trigger कहां? वो effort कहां create कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं. Effort बाहर कर रहे हैं. External effort डाल रहे हैं ना. You are making an external effort. By holding your breath, you are making an external effort. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं. So how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के muscle में trigger चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, body building ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly.
So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेलुलर फॉर्म, बेटर सेलुलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेलुलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवेनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in Ashtang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी: मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स: मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary.
क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85%. It's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months' time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking
genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body, how much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics, isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now been bursted. So now you can change your genetics also. Now, if the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it.
So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in prana shakti diagnosis. यही prana shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यासा. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत magical है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. Just invest in health and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Dinner time. Okay. So let's get to know about the program details now, and so that we can
Swamiji answer all our questions. Just give me 2 seconds and I'll share my screen. Okay, are you able to see my screen? Can you type yes in the chat? Okay, great. Thank you, thank you. So अभी हम शेयर करते हैं प्रोग्राम डिटेल्स क्या है. काफी लोग इसकी का इंतजार कर रहे हैं काफी देर से. Okay, it's a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. ये guided program है जो हमारे expert mentors हैं वो conduct करते हैं पूरा therapy training program. There are 3 modules in the program. Module 1, Module 2 and Module 3. You can call them वात पित्त and कफ also. जैसा कि स्वामी जी ने बताया है वेबिनार में वात पित्त और कफ का बैलेंसिंग है and that is done in these modules M1, M2 and M3. The duration of each module is 21 days. हर एक मॉड्यूल की ड्यूरेशन जो अवधि है वो 21 दिन की है यानी 3 हफ्ते की 3 weeks. Duration 9+1. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while from now. 10 हफ्ते क्यों है थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे और बात करेंगे इसके बारे में. There'll be 2 live classes per week. One will be the learning class and one will be the mentoring class. And you will also get access to all the videos and written instructions. So even if you miss any class, there's nothing to worry about. What is the next steps? You pay the program fee and there's a special webinar, special pricing for all the people who have attended and who have stayed back. Then you fill the participant onboarding form or the PO form and we'll create the login ID for you for the course access. And then you start attending your classes, starting with module 1, then module M2 and M3. Total classes. In module 1, there will be 6 classes, out of which 3 would be learning and 3 would be the mentoring classes. So 3 weeks or 21 days. Same goes true for module 2 and same for M3 also. So total classes would be 18. Now, apart from these classes, there will be 2 customization classes. What's customization? I'll be talking about it in a short while. And there'll be 2 Q&A live classes with Swamiji. So total classes that you'll be getting is 22 classes, 18 plus 2 plus 2. When are the classes starting? This is the 79th batch that will be starting on 9th May, which is a Monday at 6:30 p.m. Module 2 starts after 3 weeks, that is on 31st May, same time at 6:30 p.m. Module 2-3 will start on 22nd June, but you'll start with module 1 first. Mentor classes or the practice classes. For module 1, mentor classes are on Thursdays. For module 2, mentor classes are on Fridays. And for module 3, Monday classes are on Saturdays. We'll share all these details in the chat as well as in the WhatsApp group also. What is the class experience like? These are live sessions that I've already told you. Mentors watch all the participants and they give the feedback whether you're doing the kriyas correctly or you need to do them in some other way, in the right way. Then there'll be written instructions which you can download from your course dashboard, and there'll be session recordings. All the classes are recorded, I've already told you, which you'll get access to through a login ID and password. There'll be extra things also that Swamiji will be sharing with you. There'll be mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan, this is a diet perspective. How to use food so that it supports your body rather than harm your body. Then there'll be simple detox processes, and there'll be a lot of knowledge that will be shared with all of you. Before I come to the pricing or the fee for the program, I'd like to take your attention, bring your attention to the kind of money that we could be spending. Why this is important? Because we need to know how much we are already spending just to manage the disease and
when I talk about the therapy or Ashtaang Chikitsa is a permanent solution. So what's the fee of that also? The comparison to this, it won't be nothing at all. So the doctor fee you could be paying between 6,000 to 12,000 every year. These are yearly figures. They may be lower or higher depending on the city of your residence. Then if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending every year. And medicines would be extra 15,000 to 30,000 every year. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 you could be spending just to manage your disease. This is important because it's harder money for all of us. So we don't need to know where our money is going. And before I share the program details, it's very important to know who this program is not for, so that you understand clearly who this program is for. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. See, for so many years, we've been taking medicine, and that's become a habit now. Anything happens, any pain happens in the body, you take a pill, the pain goes away. And then again, when it starts, you again pop a pill. So this won't be anything like this. So it's not for people who are looking for a medicine kind of a treatment. And this is not for people who are not ready to work on their body. See, this will require an investment of your time apart from your money also. And you need to be ready to work on your body, to take things in your own hand, to take your health in your own hands. So it has to be understood properly. And this is not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day. Yes, this is the kind of time you will be investing initially. After you learn, then you will be investing 30 to 40 minutes. But because this would be new to all of you or most of you, so initially it would be 60 to 70 minutes every day. So if you're not ready to spend this kind of money, invest this kind of, time, not money, then this therapy is not for you. And this is not for those who are impatient. Things require patience. Since you got into this problem over a period of years, getting out of this disease or a problem that you are in will take some time. Not years, but still it will take some time. And this is not for who are looking for a free treatment or just some tips. A lot of webinar attendees that we've got in the past, they're there just to pick up some tips. But see, we have to understand that therapies do not work on tips. A holistic view of the whole body and the disease has to be taken and then worked on the body. Any free treatment is not free at all, because you're paying through your time and loss of results, a lot of things. Nothing is free in life, that we have to understand. Now, what all you get in the program? Prana Shakti diagnosis or root cause determination. See, this in itself is worth the program cost, because there's not many therapies which find out the root cause of the disease. They just make an intelligent guess and start treating it. But here, through the Prana Shakti diagnosis, you'll be the root cause will be determined. What is Prana Shakti diagnosis? This is a non-medical diagnosis in which you will be getting a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions and note those down in the form. Apart from that, you'll be uploading a selfie photograph without specs. If you wear glasses or specs, you don't have to wear them while taking that selfie. And for ladies, you don't have to wear makeup also. So without makeup and without specs. Now, these two things, when they go to Swamiji, he is able to know that which out of the 84 forces has become weak, due to which you've landed into your current situation. And once the solution, the root cause is known, a solution is possible. So this itself is worth the whole program cost. Now, weekly one main classes will be there of 60 to 90 minutes duration. Then there will be practice class or the mentors class, again 60 to 90 minutes duration. Then online course access for 1 year. Like I told you, all the classes are recorded. So access of those recordings will be available through the course dashboard. And you'll be getting a login ID and password. And after the 10 weeks, the recordings or the access will remain with you for complete full 1 year. So you don't have to worry about not remembering everything.
We've taken care of that. So nothing to worry about. Videos of all Kriyas done in the class. How this is different from the recording of the class? In the recording, in the full class recording, whatever people are saying, talking, all will be recorded. So that's a 60 to 90 minutes duration. But you may be just wanting to see the video of a particular Kriya. So why spend so much of time just to look for a Kriya? So all the Kriyas videos will be given separately apart from the class recording. So that's the fifth point. There'll be written instructions which you can download and take a printout also, and you do the Kriyas from there. Some people prefer written instructions, some people prefer videos, whatever suits you, you have that option. Now, point 7 is private WhatsApp group to ask doubts, questions. See, this will be your home for the next 10 weeks. On 2 days of the week, you'll be live with us, but on the remaining 5 days, when you'll be practicing alone, and if you have any doubt that time, where do you go? Who to ask? You ask in this private WhatsApp group or the support group. Our mentors are there inside the group, so they'll be answering you there and then in the group itself. And if there's a need, they'll be calling you also separately. Individual participant progress tracking. Every day you'll get a form and you'll be noting what went well, if you're facing any problem in doing your kriyas, if something is not clear to you, you're not able to understand. So we track that. Now, 9th point is therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. See, many of you would be thinking that since everybody has a different problem, why the same thing for 9 weeks for everybody? See, the body, this is all about breath control. So in the 9 weeks, the body is prepared to receive the customization. What is customization? In the first point I told you, there's the Pran Shakti diagnosis done for every participant. Based on the Pran Shakti diagnosis, in the 10th week, the therapy and the kriyas would be fine-tuned and customized as per each participant's problem and as per each participant's system or as per each participant's weak forces. Remember in the webinar, in the video, Swamiji told that there are 84 forces. Which of these forces have become weak? So after finding that out, the therapy is customized. This is very important. So everybody will get a different set of kriyas to do after the 9 weeks. Old students group. We keep in touch even after the program is over. What does this mean? When you finish your program, we'll shift you to the old students group, which means you'll still be able to ask us questions. You'll still be able to ask your doubts. So this is the only program which offers lifetime support to its participants, because we understand, see, people are in pain, you are in pain, and this therapy is online. So unlike face-to-face communication, there can be doubts, a lot of doubts. So you don't have to worry about it. Even if the program is over, we'll still solve your doubts. Okay. Now, program fee for the Ashtaang Chikitsa program is 9,500. That's the normal fee. But like I told you, there's a special webinar pricing. And for people who stayed back, let us see what that pricing is. Just 5,500 for the complete therapy. The 22 classes, the Pran Shakti diagnosis, the therapy customization. This is valid till 7th May, till 12:30 p.m. And I've done a little math here. Like I told you, there are 22 classes. If you divide 5,500 by 22, it just comes to 250 rupees per class, plus all the 10 benefits that I talked about. So it's made so affordable that anybody can afford this. And this, you can come out of your health issues permanently. The only thing that is required from your side is regular practice, regular kriyas practice. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group that you are a part of. Then you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you on your personal chat. Then you join the first module and you start attending the classes to learn Ashtaang Chikitsa. Payment details we'll share in the WhatsApp group as well as in the chat also. Now, I'd like to stop here for a while and talk about the team behind the program. The program is designed by Swamiji.
but the delivery of the program is being taken off by a super team. We've got Rachna Shrimal Bothra. Why a team is important? Because howsoever good a program may be, but if there's not proper support, you'll still won't be able to take benefit of the therapy. So we have a team of 9 people, full-time staff members. Rachna Shrimal Bothra, she's the program director. Shalini Bhagwat, then she assigns you the batches, your timing and everything. Atul Sharma is one of the senior mentors. Pooja Chopra, another mentor. Randana Swain, another mentor. Rakhi Chhabda, another mentor. Then we have Neha Upadhyay. She is in charge of the enrollments. So you'll be talking to her initially before starting your classes. She'll be helping you in completing the formalities of enrollment. Then Anil Chauhan, that's me. I'll be answering your questions in the WhatsApp group, because we may not be able to answer all the questions here due to lack of time, but I'll be answering all your questions over a period of next 2-3 days in the WhatsApp group. That's me. And then Himanshu Reddy, he is a technical person. He is the person who takes care of all the login IDs and password. So if your video is not playing, he is the person you'll be talking to. If you're not able to download your written instructions, he is the person you'll be getting in touch with. So we have a proper team of people so as to make your journey towards a health, or your complete health, and to reverse your neuromusculoskeletal problems very effortlessly and very smoothly. So with this, I end my part, and I think let me see if Swamiji has joined, so that yes, he's here. Namaskar Swamiji. जी, let unmute करते हैं. Okay, I'll just take the question. Just give me a few seconds. Okay. Yes, Smruti Kala ma'am, she's written Parkinson. That's Parkinson. So maybe she's suffering, or somebody in the family suffering from Parkinson. So one thing that I would like to say to everyone, that whatever the problem is, you try to understand in terms of your experience. कोई भी प्रॉब्लम जब इतना बड़ा अंग्रेजी वर्ड बोला जाता है ना, तो उससे आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हो गए, मगर आप उसे नहीं समझ पाते. उसे कैसे समझेंगे? अपने एक्सपीरियंस के टर्म्स. ठीक है ना? तो ये रोमन लिपि एक्चुअली हमको इतना कुछ समझ में नहीं आता. पार्किंसन जब हम कहते हैं, तो व्हाट डज इट मीन इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज इट? यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर सम लिम्ब और द फंक्शन ऑफ अ लिम्ब. आपने किसी पे कंट्रोल खो दिया ना, पार्किंसन का मतलब. नाउ हाउ डू यू कंट्रोल थिंग्स? तो सबसे पहला सवाल ये कि आप कंट्रोल करते कैसे हैं. जब आप किसी को पकड़ के खींचते हैं, तो व्हाट इज दैट यू यूज विद इन योरसेल्फ? अपने अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं उसको खींचने के लिए, या धक्का देने के लिए, या अपना हाथ ऐसे आपने हिलाया, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म? तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा. व्हाट इज द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म? यू डू एन एक्सपेरिमेंट, पुश कीजिए, पुल कीजिए, ट्राई टू रेगुलेट योर मूवमेंट. सी हाउ डू यू रेगुलेट योर मूवमेंट? यू रेगुलेट योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन. अपनी सांस रोक के आप रेगुलेट कर रहे हैं. रेगुलेटर क्या आपका? ब्रेथ होल्ड. रेगुलेटर क्या आपके मूवमेंट का? ब्रेथ होल्ड. तो आपने क्या खो दिया? व्हाट हैव यू लॉस्ट? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी. अगर उसको वापस लेके आएंगे तो पार्किंसन ठीक होगा, 100% ठीक हो जाएगा. इतना सिंपल सॉल्यूशन. But if you try to cut it down into, okay, nervous system happens because sodium potassium exchange, and then sodium potassium exchange, then it goes to your brain, and there are trigger points in the brain. Forget it. You will never be able to cure it.
That is what is happening, isn't it? क्या पार्किंसन का इलाज है कोई दवाई से? नहीं है, कोई भी ठीक नहीं हुआ आज तक. मगर क्या पार्किंसन का इलाज है? इफ यू गेट बैक द कंट्रोल, रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे वापस कंट्रोल करें, क्या उसका इलाज होगा? 100%. So you need to see things from a different perspective. Only then you'll get a solution. वही हम कराते हैं. हाँ, वही हम कराते हैं. Next. Anil, Swamiji, can we take up a testimony? He's just joined in. हाँ. ठीक. Okay. Vijay sir, are you there? Vijay sir. Vijay sir, Vijay Lakshmi ma'am, have you joined in? Vijay Lakshmi ma'am, Vijay sir. Okay, we'll take up. She's there. She is there. नहीं, संतोष ही कुछ पूछ. 1 minute. Vijay Lakshmi ma'am, Vijay sir. Okay, we will not waste time. We'll take up the questions and maybe when they join it, then we'll take it. Swati Bharadwaj ma'am says, can you please demonstrate one kriya so we have some idea as to what it will be like? There are 3 basic things. Can I demonstrate all the? भाई आपको किडनी का ऑपरेशन कराना है, ट्रायल लोगे क्या? Okay, I'll give you. ट्रायल करवा दो, दूसरी किडनी पे कर दो, फिर we'll see कि if we want a kidney operation or not. See, you basically learn 3 things. 3 चीजें आप सीखते हैं. One is called as अंगन्यासा. So what is अंगन्यासा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. What is अंगन्यासा? So suppose you catch hold of this arm and the another arm. दूसरे आर्म को पकड़ लीजिए और इसको प्रेशर डालिए. Now inhale in 3 steps. Inhale in 3 steps. Hold for 12 counts. And keep your body tense and exhale in 12 counts. It will trigger your metabolism. ये metabolism को trigger कर देगा. एक demonstration. How many kumbhaks are there? There are lakhs and lakhs of kumbhaks. लाखों कुंभक. मगर आपको क्या करना है? कोई 5 प्राणायाम कर लिया? नहीं. This is not a program like that. So आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी और फिर कस्टमाइज किया जाएगा. You will be customized because we want to see which factor is weak inside your system. There are 84 factors. 84 फैक्टर हैं आपके शरीर के अंदर. 84 स्ट्रेंथ हैं आपके शरीर के अंदर. हाँ, तो कौन सा स्ट्रेंथ वीक है हम वो डायग्नोज करके फिर आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट वी डू. ऐसे अनजाने पे ये कर लो, वो कर लो से काम नहीं चलता. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम. दैट इज व्हाई वी डू अ डायग्नोसिस. इसलिए आपका डायग्नोसिस करना जरूरी है. उसी के हिसाब से आपको जो भी मेथड दिए जाएंगे उसको फाइन ट्यून किया जाएगा. सो अंगन्यासा, वन थिंग. हठ विन्यासा, वेयर देयर इज मूवमेंट विद ब्रेथ, बॉडी मूवमेंट विद ब्रेथ and hold. The third thing is kumbhak therapy. There are methods like Prakriti Shula, Kaka Khechari, Shula Raja, व्यान, क्रिया, कुंभक. ये चीजें आपको ऐसा कुछ सिखाया जाएगा. We can't demonstrate all these things because these are इनको कस्टमाइज किया जाए, आपके हिसाब से कस्टमाइज किया जाए. सो मेरा किडनी का ऑपरेशन करना है, थोड़ा ब्रेन का करके दिखा दो मुझे ताकि किडनी का मैं करवा लूं. No, it doesn't work like that. इस तरीके से काम नहीं करती. So diagnosis is the most important part of the whole program. इसीलिए हम आपको फ्री में सीखना है कुंभक. Go to the YouTube channel. There are lot of kumbhak. We teach it for free, but those are generic things. वो जेनेरिक है ना. हम 5 नहीं, हम 50 चीजें सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं, बट those are generic things. इम्यूनिटी के टाइम पे हमने खूब almost like 250 days हमने फ्री सिखाया. Those programs are available. There are a lot of verticals and projects that we do. आप अगर जाएंगे तो अविसा के चैनल पे भी, YouTube चैनल पे you find lot of videos. Apart from that, अस्तिका
मेदिनी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है हमारे जिसमें आपको फ्री में मिलेगा, बहुत सारे कुंभक करने को उसमें मिलेंगे, बट दोज आर जेनेरिक, बहुत जेनेरिक है वो कस्टमाइज नहीं किया जाता, एंड इट डजंट एड्रेसेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट एड्रेसेस डिफरेंट प्रॉब्लम. जैसे इम्यूनिटी का है तो इट विल एड्रेस मोर और लेस दैट पार्ट. So one example, I just gave you one example. I can give you more examples. आपको थोड़ा और आइडिया दे देता हूं. Now generic idea. Suppose if you inhale for 1 unit length or time, 1 यूनिट है, कुछ भी ले लो, सेकेंड ले लो या फिर 5 सेकेंड्स को 1 यूनिट मान लो, तो 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, तो आपके लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा. 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, किडनी के ऊपर असर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. नाउ देयर आर लूप्स एंड होल्स, व्हाटएवर आई एम सेइंग, मैं जो बोल रहा हूं उसमें बहुत लूप एंड होल है. योर किडनी डजंट फंक्शन विदाउट योर लिवर. योर लिवर डजंट फंक्शन विदाउट योर हार्ट. योर हार्ट डजंट फंक्शन विदाउट योर ब्रेन. So it has to be a proper methodology. ये तो आजकल तो यही कहते हैं ना, अच्छा किडनी ठीक करना ये करो, मगर होता है क्या? क्या हम हेल्दी हो रहे हैं? नहीं हो रहे. It doesn't work like that. Next. Okay, we'll just take up the testimonials they've joined in. So Vijay Lakshmi ma'am, can you please unmute yourself and I'll spotlight you. Vijay sir, Vijay Lakshmi ma'am. Yes. Yes, madam. Namaste. Yes. Yeah. Is it audible? Yes. Yes. Thank you so much Shall I for joining. share? Pardon, madam. Yes, Vijay Lakshmi ma'am, you're audible. Yes. Shall I share my experience? Yes, yes, sure. Yes. I am a cancer survivor. I had multiple health problems with whole body squeezing pain. I could not stand even for 5 minutes and I could not walk also. But I joined Ashtaang Chikitsa 6 weeks back and I am doing all the kriyas taught so far regularly and sincerely. Now I am able to stand. I am able to go for a walk for 45 minutes. Body pain has reduced, heaviness reduced, stiffness has reduced. I am getting good sleep. Digestive problems also minimized. I am feeling rejuvenated, energized, relaxed, peaceful and calm. I have confidence that by doing these kriyas regularly and sincerely, I will be totally painless and healthy. So Ashtanga Chikitsa gave me a new life. I am grateful to Revered Swamiji and the whole team who have taught this technique. Namaste to all. Thank you so much, Vijay Lakshmi ma'am, for sharing thank your you. journey of Ashtanga Chikitsa. Vijay sir, can you please unmute yourself? Vijay sir, are you there? Okay, so I think Vijay sir, Neha, is Vijay sir there? Okay, so I'll just over to Swamiji again so that our question and answer session is not delayed. Yes, Swamiji. Yeah, next question. Next question. Anybody who wants to ask a question, they can unmute themselves and ask the question. Unmute करके पूछ लीजिए. Allow कीजिए सबको unmute करने के लिए. हाँ, allow कर दीजिए. May I ask a question? One by one, please. एक one by one. रचना जी, just you coordinate. पहला किसको देना? Yes, yes, yes.
Please raise your hand, so I'll just call out the names and one by one you all can ask. I have already raised my hand. Okay, just a sec. I cannot see raised hands. Yes, Dr. Ratan Pal Singh Chauhan, you can ask your question. Oh, okay, ma'am. Yes. Thank you giving me the chance. Yes, sir. I want to know a query that Kumbhak, the Kumbhak is a whole a process, I think so, huh? And its origin, authentic origin is from Gita, I think so, huh? And I want to know relating to the body parts, how much Kumbhak is related to the brain, how much Kumbhak is related to the liver. Are there any research regarding this? See, first of all, the origin of Kumbhak is through life. Life, if life has to be created, you need an effort-making mechanism. That effort-making mechanism is Kumbhak. So in India, we recognize this fact. And if you go to early years, in the historical periods, you will find the only thing that we used to worship is Kumbha, Kalasha. That is Kumbha. We also celebrate Kumbha Mela. Now it has also has a part called Kumbha. Kumbha basically means how can you stop something. So there is a methodology of how life gets stopped at a place and it gets born or it gets manifested. So Kumbhak is effort making mechanism which helps in manifestation of life. Where is its origin? Its origin is in your body or in the very process of life. So somebody mentioned Kumbhak in the history. Yes, many people have mentioned. Maybe in Gita also it has mentioned. Maybe in Upanishad also it has a mention. In Vedas also it has a mention. But they are just mentioning the effort-making mechanism. This effort-making mechanism can be used to come out of life or to get into life. Two things. या तो जीवन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या जीवन से निकलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. द योगा कलाचार जो योगा लिनेज है उसने इसको जीवन से निकलने के लिए इस्तेमाल किया. जीवन में आने के भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इन वेरियस फॉर्म्स. देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट यू कैन डू विदाउट कुंभक. आपको अगर कर्मकांड भी करने हैं तो उसके पीछे भी कुंभक होता है. सो आपको अगर कुछ भी करना है उसके पीछे उसको करने की जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, वो कुंभक के अलावा नहीं हो सकता. आप बिना कुंभक के देख नहीं सकते, फोकस नहीं कर सकते. आप बिना कुंभक के आवाज नहीं निकाल सकते. आपका जो वॉइस मैकेनिज्म है वो कुंभक के जरिए ही काम करता है. आप बिना कुंभक के हाथ पांव नहीं हिला सकते. So when I say effort making mechanism of life, it is just not related to human life, but any kind of life which is possible in this universe. इस ब्रह्मांड में कोई भी जीवन पॉसिबल है बिना कुंभक के नहीं होता. तो इसको मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करता हूं. आपको तीन चीजें चाहिए हमेशा जीवन पाने के लिए. अगर पृथ्वी पे देखें तो सूर्य, सोम, अनिल. अगर और थोड़ा पीछे जाएं, अगर मानव शरीर में देखें वात, पित्त, कफ या ओजस, तेजस, वर्चस. और थोड़ा पीछे जाएं शिव, शक्ति, कुंभक. ये फंडामेंटल है लाइफ का. हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके जरिए जो एफर्ट आपके ऑर्गन्स लगा रहे हैं या आपकी बॉडी लगा रही है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्योंकि बीमारी का मतलब ही है आपका या तो ऑर्गन एफर्ट नहीं कर पा रहा या तो वो रिजुवनेट नहीं कर पा रहा अपने आप को. आपका रीजनरेशन कम हो गया, डीजनरेशन ज्यादा हो गया. ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से डायनामिक फैक्टर्स हैं जो कि कुंभक से रेगुलेट होते हैं. अगर उसको हम ठीक कर दें, we can come out of lot of problems. One of the example, and I would appreciate a cancer survivor has given a testimony. हमारा कैंसर का भी प्रोग्राम होता है. And what we see, this is one of the testimonial she has given कि अब वो एफर्ट कर पा रही हैं. That means she is able to walk. वो चल नहीं पाते थे, से उठ नहीं पाते थे. आपका हार्ट भी तो एफर्ट लगाता है ना काम करने के लिए, आपका लिवर भी लगाता है एफर्ट काम करने के लिए.
तो हमारे पास में कैंसर के ऐसे पेशेंट्स आते हैं वो गो थ्रू कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इज केमिकल बम्बार्डमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. जहर है, मस्टर्ड गैस जिससे हिटलर मारा करता था लोगों को, वो आज हम वो खराब मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. मगर क्या आपका शरीर इससे नुकसान पे नहीं आएगा? बिल्कुल नुकसान में आता है. तो कई लोग कीमोथेरेपी से 10-10, 15-15 दिन उठ नहीं पाते थे. उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होती थी उनकी. लेकिन जैसे ही कुंभक करना शुरू किया, वो 24 घंटे के अंदर उठ के खड़े होकर काम करने लग जाते हैं. लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब ही डायनामिज्म है. जब आप उसको इंप्रूव करेंगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. और इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेसिफिकली डिजीज से निकलने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the next question is by Chetan Kumar sir. Please unmute yourself. Chetan Kumar sir. नमस्कार स्वामी जी. नमस्कार जी, बोलिए. मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है. उनको 10-12 साल पहले पैरालिटिक अटैक हुआ था. परमिशन दिलं तेव्हा ते ऍडमिट झाले. मगाशी होत नव्हतं. हेलो. तुला परमिशन दिला का? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. The rest of the उनको पैरालिटिक participants, अटैक हुआ please था. maintain silence. उसके बाद लास्ट है. उसके हाँ बाद जी, बोलिए बोलिए. काफी 8-10 साल वो दवाई खाते रहे. एक मिनट रिजल्ट. और हाँ अभी उनका अनम्यूट कैसे हार्ट करेंगे? का वाल लूज हो गया है. हाँ और उनको मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. थोड़ा सा काम करने में वो थक जाते हैं. हाँ तो उसके लिए इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है. हाँ. पहले इनिशियली आपने जो बताया था उनको क्या हुआ था, कोई एक बार बता पैरालिटिक दीजिए. अटैक हुआ था. अच्छा, पैरालिटिक अटैक. हाँ, तो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हुआ था. तो उसी समझ टाइम गया. हम डॉक्टर के पास ले गए थे. ठीक है. तो अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वाइड है. इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. पहली चीज हाँ, कि आपके शरीर में क्लॉट होने की प्रवृत्ति कैसे आती है? क्लॉटिंग तो आपका बचाने का तरीका है ना. आपके शरीर को क्लॉट करके ही आपका शरीर आपको बचाता है, क्योंकि आपको चोट लगती है, वहां पे क्लॉट नहीं होगा तो सारा खून निकल जाएगा. सो क्लॉट करवाना बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अचानक से फेटल कैसे हो गया? आपके शरीर के अंदर क्लॉट कैसे जम गया जबकि वो नहीं होना चाहिए था? क्योंकि शायद वहां पे रिस्क क्रिएट हो गया. तो आपके बॉडी ने उसको बचाने के लिए क्लॉट क्रिएट कर दिया, और क्लॉट के कारण अचानक से एक एरिया आपके ब्रेन का काम करना बंद कर गया और पैरालिटिक अटैक हो जाता. तो इसका मतलब जड़ पे आते हैं, वापस से आते हैं. क्लॉट क्यों हुआ? सबसे पहली बात ये, वो तो बचाने का है ना. शरीर अपने आप को बचाता है उस तरीके से. तो अंदर क्या रिस्क क्रिएट कर दिया आपने? अब मुझे एक बात बताइए कि हम क्या रिस्क क्रिएट कर रहे हैं? तो जब भी, क्या आपका शरीर केमिकल मेडिसिन के लिए डिजाइन हुआ था? आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? नहीं डालते ना. कॉमन सेंस है ना. पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल के लिए बनी है, उसमें डीजल डालोगे तो रिस्क हो जाएगा, नहीं चलेगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन चोक हो जाएगा. पर आप तो रोज अपने शरीर में केमिकल मेडिसिन डाल रहे हैं जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ था. तो क्या आपका बॉडी रिस्क में नहीं आएगा? थैंक्स कीजिए शरीर का, जिसको इतना बम्बार्ड करने के बाद भी आपको बचा लिया. आज तक सांस ले रहे हैं आप. तो पहली बात तो रिस्क तो हम क्रिएट कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. दूसरी बात, हमने क्या एनवायरमेंट, जीवन को फलने फूलने लायक छोड़ा? क्या हमने अपना वातावरण नहीं प्रदूषित कर दिया? जमीन खराब कर दी, जमीन पे केमिकल डाला, उसकी फर्टिलिटी खराब. आज कहते हैं जी जैविक खेती करो, तो 100 साल पहले क्या कर रहे थे? जैविक खेती तो कर रहे थे. तो हमारी समझदारी नहीं मार दिया हमको. तो आज कहते हैं कि नहीं जी ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, केमिकल मत डालो जमीन पे, जमीन खराब हो जाएगी. आपने अपने जमीन पे इतना केमिकल डाला, वो उसको कब सुधारेंगे? जमीन को तो केमिकल ऑर्गेनिक खेती करके आप सुधार देंगे, अगले 100 साल में ठीक हो जाएगी. शरीर कब ठीक होगा? उसकी ऑर्गेनिक खेती कब करनी है आपने? तो रिस्क अगर आप क्रिएट करेंगे तो बॉडी इसको बचाने की कोशिश करेगा. ये बचाने के प्रक्रम में देखिए पैरालिटिक अटैक तक हो जाते हैं. दूसरी बात, यही बचाने के प्रक्रम में आपका लिवर, आपको खरोंच लगती है, खरोंच ले लीजिए अपने स्किन को, क्या होगी? जलन होगी ना. इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन. आप घी लगाएंगे तो जलन कम हो जाएगी ना. अब आपके लिवर को तो आप जलन पैदा कर रहे हैं रोज, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं.
आप अनाज क्या खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, जिसके लिए आपका शरीर समझता नहीं है इसको, उसको समझ नहीं आता है क्या खा रहे हैं आप। दवाई खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? तो उसके लीवर में जलन होती है, उसको खरोंच लग जाती है। अब वो बेचारा लीवर कैसे बचाएगा अपने आप को? वो तो फैट क्रिएट करेगा ना अपना। आप घी लगा लेते हो बाहर से, वो भी तो घी जमा करेगा अपना। फैटी लीवर क्या होता है? लीवर को बचाने का तरीका। आप फैटी लीवर को बीमारी मान रहे हो, जबकि आप रिस्क को खत्म नहीं करना चाहते। जब आपके हृदय में आपका हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा, जोर नहीं लगा पा रहा, आप पाइप से पानी डालते हो पेड़ पौधों में, अगर पानी का प्रेशर कम है तो क्या करते हैं आप आगे के पाइप के सिरे को दबाते हैं ना, उसके जो ल्यूमेन है उसको कम करते हैं ना। तो आपका हार्ट कैसे करेगा कम? वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस के जरिए कम करेगा ना, फैट डिपॉजिट करके उसके ल्यूमेन को कम करेगा, ताकि अच्छे से एफर्ट लग पाए, प्रेशर बन पाए। बिना प्रेशर के तो आप काम ही नहीं कर सकते। बिना प्रेशर के तो आपका हार्ट काम नहीं कर सकता। इसीलिए बॉडी में प्रेशर बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ रही है ना आजकल। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आपका शरीर बचाना चाह रहा है अपने आप को। बिना प्रेशर के आप नहीं क्रिएट कर पा रहे वो प्रेशर। तो या तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, या तो हार्ट अपने अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लॉकेजेस क्रिएट करके वो प्रेशर बढ़ाता है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, अपने आप को बचाने का तरीका है। अच्छा, फिर हार्ट के वाल्व्स लूज हो गए, दोबारा से प्रेशर नहीं बना पाएगा हार्ट अब। तो क्या करेगा? हार्ट फ्लटर, टैकीकार्डिया, इस तरीके की चीजें क्रिएट करेगा, जोर लगाने की कोशिश करेगा। मगर वाल्व का बंद होना और खुलना दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक तो प्रेशर और दूसरा उसका नर्वस स्ट्रेंथ, नर्व का स्ट्रेंथ। आपके दरवाजे जो है ना, उसका जो कब्जा होता है वो क्या है? वो आपका नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से वो बंद होगा खुलेगा। तो प्रॉब्लम कहां पे है? नर्व का वीकनेस हो गया। नर्व का वीकनेस क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे एक क्लॉट क्रिएट हो गया था और ब्रेन का एक पार्ट काम करना उसने कम कर दिया, उसकी क्षमता कम हो गई। तो क्या नसें आपस में नहीं जुड़ी हुई? क्या ये प्रॉब्लम कहीं और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कहां पे कैरी फॉरवर्ड हो गया? जहां पे वीकनेस ज्यादा थी, तो हार्ट के वाल्व में कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये कहीं और भी हो सकता है। लोगों के पांव के अंदर जो वेन्स हैं उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो वो वेन सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, पांव काम करना बंद कर देता है। इनको अलग अलग नाम से आप बोल दीजिए, मगर कारण पे तो जाइए तो आपको पता चलेगा ये हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर जो है आपके शरीर में कमजोर होता ही जा रहा है, फॉर वेरियस रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मगर जानने से भी क्या, जब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाए। तो आप अपने नर्वस स्ट्रेंथ को, हमारे पास में लोग आते हैं विद ड्रॉप फुट, ऐसे लोग हैं जो मैराथन दौड़ा करते थे, उनका ड्रॉप फुट हो गया, मैराथन दौड़ना बंद हो गया, उनकी लाइफ, वो कहते थे हमारे लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज खत्म हो गई, और उन्होंने 6 महीने कुंभक किया, आज दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैराथन दौड़ने की। अरे कई दोबारा से चीजें चालू हो गया हो जाते हैं कि वो दिमाग से फिर वो निकलती नहीं है। हाँ, वो भी बात है। और आप देखिए ऐसी चीजें जो नर्वस वीकनेस है, माइस्थीनिया ग्रेविस, आपके चेहरे पे कंट्रोल नहीं होता मसल्स का, फ्रोजन शोल्डर हो गया या लूज शोल्डर हो गया, शोल्डर निकल जाते हैं, आपको सर्वाइकल की इश्यू हो गया या घुटनों में इश्यू आ गया, जो भी जहां पर भी नर्व्स के साथ में एसोसिएशन है प्रॉब्लम का, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि कोई दवाई नहीं है जो नर्वस सिस्टम को रिजुविनेट कर सके। तो आपको ऑपरेट कराने के लिए बोला जाएगा, मगर ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं। कई लोग आते हैं कहते हैं हमारे तो यहाँ पे स्लिप डिस्क ऑपरेशन के लिए बोला गया, तो कह रहे हैं कि और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा स्लिप डिस्क एक जगह पे ऑपरेट करा लीजिएगा, दूसरी जगह फिर हो जाएगा, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ तो बढ़ाया नहीं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क हो गया। वो जो व्यान फैक्टर जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी में टेंशन बनता है प्रॉपर, उसको तो आप बढ़ा ही नहीं रहे, तो आप ऑपरेट करके क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब जो रिजुविनेशन, जो टेस्टिमोनियल आप देख रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? वो क्या हमारी बदौलत है? नहीं, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, आपका शरीर मैजिक है। हम तो आपको तरीके बता रहे हैं, अगर आप इन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, आपका शरीर अपने आप को ठीक कर देगा। आपका एक रिकवरी स्ट्रेंथ होता है हर एक के शरीर का।
बीमारी से कौन ठीक करता है आपको? दवाई नहीं ठीक करती। आपकी हड्डी टूटती है तो कौन जोड़ता है? आपका शरीर जोड़ता है। आपको खरोंच लगती है तो कौन ठीक करता है? मत लीजिए मेडिसिन, एक हफ्ता देखिए, वो अपने आप शरीर ठीक कर देगा। तो ठीक कौन करता है आपको? आपको लगता है मेडिसिन ठीक करती है? आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी जो आपको ठीक कर सके। एंटीबायोटिक भी आपके शरीर में गए हुए कीटाणुओं को मारने का काम कर रहा है, मगर आपको ठीक करना तो आपका शरीर ही करेगा। सो देयर इज अ रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। उस पर तो काम कीजिए, उसको तो बढ़ाइए। आपको दवाइयों का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दवाई सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर मैनेज तो क्रिमिनल को किया जाता है। अपने बॉडी को तो क्रिमिनल मत बनाइए कि जिंदगी भर आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रहे हैं, थायराइड को मैनेज कर रहे हैं। क्या हमारा शरीर क्रिमिनल है इसको मैनेज करके रखा जाए? नहीं, लाखों सालों से तो ठीक किया इसने हमें। 100 साल पहले किसको डायबिटीज थी? 100 साल पहले इतनी फिजिकल इश्यूज किसको आ रहे थे? 100 साल पहले ब्लड प्रेशर किसको होता था? थायराइड इश्यू किसको होता था? किसी को नहीं होता था। और फिर कहते हैं ये जेनेटिक है, तो क्या हम उनकी संतानें नहीं है 100 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे? क्या हम मार्स से आए हैं? क्या हम मंगल ग्रह से टपके हुए हैं? नहीं, ये हमने खराब किया है अपने आप को। तो इस समय सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अपने रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। और अगर आप अपने रिकवरी, शरीर की इस रिकवरी स्ट्रेंथ को, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर जो है वो मैजिक है, वो आपको ठीक कर देगा। आपको केवल इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है और ये शरीर आपको ठीक कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर के रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तरीके बता रहे हैं। रिकवरी तो आपकी बॉडी ही करेगी, क्योंकि ये शरीर ही मैजिक है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये शरीर ही मैजिक है। आप इसको सपोर्ट करें, इसके अगेंस्ट में मत जाएं, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको सपोर्ट करें और ये शरीर आपको किसी भी बीमारी से निकाल देगा। हमारा पूरा पर्पस है कि शरीर के वो जो बेसिक स्ट्रेंथ्स हैं, आपको बताया होगा अभी मैंने अष्ट शरीर के बारे में। देयर आर 6 बेसिक स्ट्रेंथ्स: देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ऐसे 6 बेसिक स्ट्रेंथ हैं। 6 बेसिक स्ट्रेंथ और अष्ट शरीर पे ये काम करें तो कितने हो गए टोटल फैक्टर्स? 48, 8 6 48, 48 आरोह अवरोह, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर कितना हो गया? 96। अगर आप अपनी शरीर को नापे तो 96 फिंगर विड्थ होनी चाहिए। ये साइंस है, आप इंडियंस हैं, साइंस हमारे खून के अंदर है, भारतीय खून की पैदाइश है साइंस। ये तो फिरंगी चुरा के ले गए हमारा साइंस, और इसी साइंस से इन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी, क्योंकि चुराया हुआ माल हजम नहीं होता, आज ना कल तो दिख ही जाने वाला है। तो पहली बात, आपको अपने शरीर पे काम करना है। शरीर मैजिक है। काम करने का तरीका हम आपको अष्टांग चिकित्सा में बताते हैं, उस पर काम कीजिए। आपके नर्वस सिस्टम रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगा, आपके रिस्क फैक्टर्स कम होने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, तो और जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ठीक होना। रीजनरेशन को हम बढ़ा रहे हैं। रीजनरेशन बढ़ता है तो न्यूरो रीजनरेशन भी होता है, यही हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। एलोपैथी कहता है न्यूरो रीजनरेशन नहीं होता है, पिछले 100 साल से बोल रहे थे वो, लेकिन आज के टाइम पे नए रिसर्च कर रहे हैं कि भाई न्यूरो इलास्टिसिटी होती है। तो अब उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि होती है, पर हमें नहीं मालूम कैसे होती। मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका जिससे होती है। न्यूरो इलास्टिसिटी कैसे होती है? कुंभक से होती है, और वही तरीके हम सिखा रहे हैं। तो अगर आप इसे करते हैं या कोई भी इसे करता है तो रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं बॉडी के, तो फर्दर प्रॉब्लम आपकी बॉडी क्रैशेस नहीं होती। 2.5 साल से हमने डायबिटिक लोगों पे काम, जिनकी शुगर लेवल बहुत हाई होने के बावजूद उनका ग्लूकोमा ठीक हो रहा है, उनकी न्यूरो सर मैंने प्रॉब्लम्स ठीक बोल तो हो रही दिया था, है। मैं उससे बात कर ले रहा हूँ, कल ही मैंने बता दिया। तो रीजनरेशन फैक्टर्स, किसी का क्रैश नहीं आया। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आप किसी को बोलिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं करने के लिए, कीजिए घर पे, खड़े हो जाइए और किसी को बोलिए आपको धक्का दे। आप बैलेंस कैसे बनाते हैं अपने? आप देखेंगे आप सांस रोक के बैलेंस बनाते हैं, कुंभक से ही आप बैलेंस बनाते हैं। तो कुंभक अगर आप करते हैं तो ये बैलेंस फैक्टर, 3 चीजें, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, भाव राग एंड ताल, यही आपके देश का नाम है ना, भारत, भाव राग एंड ताल, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है।
सिर्फ ये जानना है कि इसको कैसे एस्टैब्लिश करना है. अरे Okay, ते आत गेलं की ऐकू येत. Bata sir, you can please unmute yourself and ask your question. Bata Krishna Behera sir. Guruji Pranam. Pranam. My doctor, I'm a rheumatologist. My name is Pratikanta Patra. I'm from Jashpur, Odisha. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, special case of inflammatory bowel disease. What my doctor diagnosis. Yes. I had already talked about in the last answer where I've said rheumatoid arthritis. One of the major thing to control in this is inflammation in the body. So it is an autoimmune disorder. It is an autoimmune disorder. When you say autoimmune disorder, what does it mean? Immunity is to protect you. So why it has gone against a human body? Because there are risk factors that we have created within the body. If there will be more risk factors, your immunity will come up. But given no work, because the risk doesn't actually, your immunity doesn't work or cannot work on a particular risk every time. It will try to reduce the risk and then it will go down. But every day, if you keep increasing the risk, which also enters the psyche of a person, then the immunity, the rise of immunity will not find a work to do. So it will get confused. Every day, if you increase the risk of your body, the immunity will get confused. So this confusing immunity is called as autoimmune disorder. Now, how to control autoimmune disorder? But first of all, you need to understand that autoimmune disorder doesn't mean that it has gone to 10 points and it will remain at 10 points. So it's you need to come out of the psyche also. Autoimmune disorder feel better down. It is not that autoimmune disorder remains at a certain level throughout life. No. Morning it can go a little more confused, and in the afternoon, if you feel fine and better, the autoimmune disorder rests. It becomes fine. So it depends on reducing the risk factors of your body. Again, the inflammation is a resultant of a increased risk factor in the body. It happens because your liver is not functioning well. It may happen because your adrenal gland is finding some kind of an unrest because of various factors. Now, how will risk reduce in a very simplistic understanding? How can you reduce risk factors in your body? So have you seen small kids on the red light or they are begging for something, food or money on the red light? You know, during the corona time, they didn't get corona. But our kid resting very well in a good locality, they get into all sorts of problems. Why? All those kids who are at red light begging in the mid-afternoon, in the rainy season, the cold season, you'll find in all the season, you'll find them there. Why don't they get into problem? Why kids living in good societies, they get into more problem? Because they have less resilience. Those kids at the red light have more resilience. So their risk factor also is less within the body. They can bear any kind of a temperature, weather, because their body is robust from within and the risk factors becomes less. What Kumbhak will do, it will create that robustness within you or within somebody, so that whatever is risk at this point of time, after a certain period of doing Kumbhak, when your system becomes robust, the same risk is not a risk for you. For a weak person, a small kind of a risk is big. For a strong person, even a bigger risk is not that big, isn't it? So if you're functioning, if the functioning of organs are proper and your organs are robust, then the risk factor which is there within you at this point of time will get reduced. And so the autoimmune disorder will have to rest. It also, adrenal fatigue, there is a word called adrenal fatigue. You can search in the Google and find out what is it. But adrenal fatigue has become a common factor in humanity at large at this point of time because of unconducive environment, food, and lifestyle.
So kumbhak will make you more resilient towards these distortions, and then you'll see slowly the person will come out of autoimmune disorder. They'll get lot of relief in rheumatoid arthritis where there is lot of stiffness. If you do kumbhak for just a week, see your joint will become much more flexible, at least 60% more flexible than before, comparatively. Just 10 days of kumbhak, a week or 10 days of kumbhak. But it will not get sustained unless until you practice it every day. In 6 months' time, you'll see your body will transform. Right, so we need to support our body at this point of time through kumbhak. Kumbhak is one of the most powerful ways. You can't support your body through medicine and medication. It will make it more weak. So management, urgency management, emergency management is okay through medicine, but medicine is not a treatment. It is just an emergency management. You need to understand, you must treat your body to come out of the problem, and your body can come out of any problem. Anita Mehta, ma'am, please unmute yourself and ask your question. Anita Hello. Mehta. हाँ जी बोलिए. Galaxy A51. You Hello, can ask. hello. रचना हाँ जी में बोलिए. हाँ मेरे आँख के नीचे सूजन है, किडनी फंक्शन प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन डायबिटीज, प्रॉब्लम है. किडनी एक काम कीजिए. हाँ देखिए, आपको डायबिटीज है ना. हाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल. सबसे पहले क्या हुआ? डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ? नहीं, पहले सोराइसिस हो गया था, फिर डायबिटीज. हाँ फिर सोराइसिस के डायबिटीज. बाद डायबिटीज. हाँ फिर ब्लड प्रेशर. हाँ ठीक है, फिर तो आप इस प्रोग्राम में आ जाइए, आपको इन सभी चीजों में रिलीफ मिलेगा. हाँ, किडनी के लिए आपको स्पेशल मेथड्स देंगे हम. किडनी के लिए पहले देखा तो जाए कि आपके अंदर जो शुरुआती वीकनेस है, सोराइसिस जो हुआ था, वो किस वजह से हुआ. अगर उसको हम ठीक करेंगे तो, और आपको किडनी के लिए अलग से हम मेथड भी देंगे, तो आप देखेंगे ये सूजन कम हो जाए. ठीक है. आप किडनी में डायलिसिस हो रहा है क्या? आपका डायलिसिस हो रहा है क्या? आप हाँ या ना बता दीजिए, मुझे पता चल जाएगा. अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. हाँ नहीं हो रहा है तो आप जल्दी ज्वाइन कीजिए. एक बार शुरू हो जाएगा फिर मुश्किल हो. अच्छा. हाँ ठीक है ना. आपको कौन सा जल्दी इस पे प्रोग्राम काम ज्वाइन करना है. कौन सा प्रोग्राम? यही प्रोग्राम ज्वाइन करना है. इसमें हम आपको डायग्नोस करके ना कुछ स्पेशल तरीके किडनी के लिए अलग से भी बता देंगे. पहले देख तो लें आपके क्या वीक फैक्टर्स. अच्छा. अष्टिका या ये कुंभक? यही वाला ज्वाइन कीजिए ना. अस्तिका में अगर पहले से फायदा उठा लो आप, आपको बहुत फायदा हो जाएगा. उसमें कुछ बचेगा तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कुछ और करना है कि नहीं. न्यूरो मस्कुलर ज्वाइन करने का है. हाँ न्यूरो मस्कुलर. अच्छा. हाँ. Okay, Anju ma'am says, what if we are doing it wrongly anytime? How will we know, and what will be the result if we have done it wrongly? Give me example of one person who has died because he has stopped or she has stopped her or his breath. पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में एक इंसान का एग्जांपल बता दीजिए जिसने सांस रोक के अपने आप को मार दिया. नहीं, आपको जबरदस्ती कर फांसी लगानी पड़ती, किसी और को आपकी सांस रोकना पड़ता. तो पहली बात, एफर्ट लगाने से आप अपना बुरा कर देंगे क्या? नहीं, जीवन का मतलब ही एफर्ट लगाना होता है. आप एफर्ट लगा के देखिए, आप बुरा कर ही नहीं सकते. पहली बात, जोर जबरदस्ती करेंगे थोड़ा तकलीफ आएगी फिर ठीक हो जाए, मगर आप अपना बुरा नहीं कर सकते. एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म से आप अपना बुरा नहीं कर सकते, तो आप गलत नहीं कर सकते. हाँ, आपको बेनिफिट नहीं मिले ये एक अलग बात है. तो कैसे करेंगे, इसीलिए हम आपको तरीका बताते हैं. ये तरीके ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का इंसान कर सकता. तो पहली बात तो ये कि आप इसे गलत कर नहीं सकते. हमने इसको डिजाइन ही ऐसा किया हुआ. ये बात अलग है कि आप इसे ठीक से नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी आपका नुकसान नहीं. पहली बात तो ये, वो नुकसान वाला पार्ट हटा दीजिए. अब दूसरी बात, क्या आप इसे ठीक से कर पाएंगे?
लाइव जैसा आप ठीक से कर सकते हैं। अगर मैं फिजिकली ट्रेनिंग, अभी किसी ने पूछा ओडिशा के आसपास में फिजिकल ट्रेनिंग, नहीं, अगर लाइव मेरे पास में आए और आप सीखें और ऑनलाइन सीखें, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई भी फर्क नहीं। इनफैक्ट ऑनलाइन सीखने पे आसानी ये होती है कि आपके पास में ऐसे वीडियोस होते हैं जिसको आप बार बार रिपीटेडली देख सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मेंटर्स आपको क्लास देते हैं जहां पे कि वो ये देखते हैं कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर, या आपको सपोर्ट करने के लिए वो, क्योंकि आपके कैमरास ऑन होते हैं क्लासेस में, तो आपको देख के बताया भी जाता है। वीडियो, मेंटर्स, आप कभी भी पूछ सकते हैं कोई डाउट। ये ऑनलाइन प्रोग्राम की ब्यूटी है, टेक्नोलॉजी की ब्यूटी है कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लाइव करेंगे तो बहुत पैसा खर्चा होगा, अगर मेरे साथ में लाइव करना चाहेंगे तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप घर पे बैठ के कीजिए, आप ज्यादा अच्छे से अफोर्ड भी कर पाएंगे, आप अच्छे से कर भी पाएंगे। और एक और बात, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, 10 हफ्ते का प्रोग्राम है, उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे आप। तो ये दुनिया में ऐसा प्रोग्राम है जो कभी छोड़ता ही नहीं अपने पार्टिसिपेंट। तो आप किसी भी समय कभी भी, 1 साल तक तो आपका वीडियो आपके पास में रहता ही है। तो बहुत सपोर्ट सिस्टम है, जितना आप लाइव जाके कर सके उससे ज्यादा अच्छा आप ऑनलाइन कर पाएंगे और कहीं से अपने घर के कन्वीनियंस से कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आपको पता चलेगा कि और भी ज्यादा आसान है। केवल कुछ लोगों को थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्टी होती है, तो इतना ज्यादा टेक्निकल इसमें बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप वहां पर क्लिक करना है, एक बार कोई दूसरा आपको हेल्प कर दे, दूसरी बार आपको पता चल जाए। मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्वामी जी। हेम जी पूछ रहे हैं, आई हैव अ स्मोकिंग प्रॉब्लम एंड आई एम नाउ फेसिंग सम इश्यूज विद बॉडी पेन, डू आई नीड टू क्विट स्मोकिंग टू सॉर्ट द पेन इश्यूज? नहीं, यू डोंट नीड टू क्विट स्मोकिंग, बट यू वुड नॉट लाइक टू स्मोक। क्या ये चलेगा? अच्छा, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। स्मोकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग अगर स्मोकिंग को प्रॉब्लम बनाएंगे तब तो वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको भी मालूम है, चाहे वो सिगरेट के डिब्बे पे कैंसर, इतना खराब सा कैंसर, गंदा सा फोटो लगा के देते हैं, तभी आपको मालूम है स्मोक करने से आपको तो फायदा हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है जो कि वो स्मोकिंग करके वो एनर्जी आ जाती है, वो रिलैक्सेशन आ जाता है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी की एबिलिटी नहीं है रिलैक्स करने की, तभी वो घुटी चाहिए होती है ताकि आपका बॉडी थोड़ा ढीला हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आपका माइंड थोड़ा ढीला हो जाए, रिलैक्स हो जाए। आप सब्सटेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है। पहली बात तो आप इसे गलत बोलना छोड़ दें, क्योंकि आपकी बड़ी मदद कर रहा है, तभी तो आप छोड़ नहीं पा रहे इसको। अब मुझे बताइए, आप डिसेबल्ड हैं कि नहीं? अगर गोली खा के इंसान जिंदा रहता है तो डिसेबल्ड ही है ना। लोग कहते हैं भाई पड़ोसी का लड़का जो है वो ड्रग एडिक्ट है, अपने घर में जरा देखिए कितनी दवाइयां रखी। अरे पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है, आप ड्रग एडिक्ट हैं। आप व्हील चेयर पे चलेंगे तो क्या वो आप एबल्ड है? नहीं, आप डिसेबल्ड। तो आपको खुशी एक गोली खा के मिलती है, या कोई धुआं अंदर लेके मिलती है, या कुछ अल्कोहल डाल के मिलती है, या ड्रग लेके मिलती है, तो आप तो सपोर्ट ले रहे हैं ना किसी और चीज का, जस्ट टू बी अ लिटिल रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। वो दूसरी चीज खराब नहीं है, मगर क्या है, आप डिसेबल्ड हैं। तो आपको अपनी एबिलिटी बिल्ड नहीं करनी। क्या आप नहीं चाहते कि बिना किसी के सहारे के आप खुश हो सके, आप रिलैक्स हो सके? उसके लिए आपको अपने अंदर क्षमता बिल्ड करनी पड़ेगी, एबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं ऐसे लोगों के जो कुंभक करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा स्मोक करने का, लेकिन क्योंकि आदत बनी हुई है तो हम जबरदस्ती कर लेते हैं। मैं ऐसे कितने ही लोगों को आपको दिखा सकता हूं जो अल्कोहल पीने की उनकी आदत थी, वो कहते हैं कि अब इतनी इच्छा नहीं होती, अब जरूरत नहीं पड़ रही इतनी, ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद ही अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो स्मोक करके फिर हमको थोड़ा खराब भी फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि थोड़ा स्मोक करते हैं तो हमको लगता है थोड़ा कुछ लगता है अपने कंट्रोल में नहीं है। ड्रिंक करने के बाद ऐसा लगता है जो कंट्रोल में खुशी थी वो कंट्रोल में नहीं रह के अच्छा नहीं लग रहा। We would in future run a de-addiction program, and Kumbhak can do de-addiction in the most powerful way. But we don't have that
leverage and resource at this point of time so that we can run many programs. इसीलिए थोड़ा टाइम के बाद में we will do a de-addiction program which will be very powerful. Now, I am not saying smoking is bad. What I am saying is, don't you want to build that ability to be relaxed and happy by yourself? क्या वो आप नहीं चाहते? तो वो अगर कुंभक करने से आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद केवल एक इच्छा शक्ति, एक बार अगर आप कह दें कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, that's it takes. The moment you feel empowered and drop it, वो ड्रॉप हो जाएगा. उसके बाद कभी 2, 4, 6 महीने में कभी शौक से कर लिया तो दैट इज नॉट एन एडिक्शन. तो एडिक्शन नहीं, एडिक्शन का मतलब डिपेंडेंसी है, उसको ठीक कर लीजिए. शौक से कभी कर लिया तो दैट इज नॉट एन एडिक्शन, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. तो अपने को एम्पावर करना जरूरी है, वो जरूर कीजिए, चाहे आप स्मोकिंग छोड़ना भी चाहते हैं चाहे नहीं छोड़ना. उससे जो प्रॉब्लम आ रही है आपके शरीर में, कम से कम उससे तो निकलने का उपाय कर लीजिए. हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आपके शरीर का स्ट्रेंथ बड़ा होगा तो स्मोकिंग करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, है ना. ये करना जरूर. So we have taken many questions. Okay. There are a few more questions, Swamiji. People who have raised their hands, should we take them up? If there are specific questions, मतलब क्योंकि ज़्यादातर तो आंसर कर ही दिया. Shukumar Chakraborty, can you please unmute yourself? Nemani Bala, you can unmute yourself. Komal ma'am, you can unmute yourself. Can you please hurry up, Swamiji, to join another session? So. हाँ जी, नमस्कार, बोलिए. नमस्कार गुरुजी. हेलो. नमस्कार. हेलो. हाँ जी, बोलिए. हेलो, नमस्कार गुरुजी. नमस्कार जी. हाँ, actually I am staying in Baroda and advocate notary, practicing since 30 years. और मेरे को करीबन 25 years से अस्थमा है, और 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें रिब्स भी टूट गया था. पर अभी कई सालों से मेरे को ये थोड़ा सा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये रिब्स पेन में ये बैक शोल्डर ब्लेड का बहुत पेन हो रहा है, और करीबन 1 साल से तो बहुत है कि सडनली 15-20 दिन में 1-2 दिन होता है तो सो भी नहीं पाते. आप अस्थमा के लिए इनहेलर ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं कोई? हाँ, सवेरे अस्तालिन रोटा के ले रही हूँ. हाँ, तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट प्रोग्राम. एक आप नंबर छोड़ दीजिए, विल डायरेक्ट यू टू अ प्रोग्राम कॉल्ड षडांग प्रतिष्ठा. बिकॉज योर प्रॉब्लम इज based around an aspect of life which is called as कूर्मा. वो जैसे ही ठीक होगा आपका इनहेलर टूट जाएगा, वो करके आपको इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड you'll see your body will start recovering. तो पहली चीज तो वो बोलिए. ठीक है, पहली तो वो एस्पेक्ट को एड्रेस कर लीजिए. पित्त और एसिडिटी भी बहुत है, और हाँ, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा. आपका मेडिकेशन निकल जाएगा. हमारे पास में एनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर वो इनहेलर पे थे, उनका इनहेलर खत्म हो गया. तो पहली चीज तो वो दवाइयां वो भी ठीक है, वो भी है उसके अंदर. पेन उसी से रिलेटेड है. तो स्टार्ट एड्रेसिंग द कोर को आप एड्रेस करना शुरू करेंगे ना, so this will get eased out. There are processes in that program which will take care of your pain factors, and स्पाइन में अगर इशू है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा. शोल्डर ब्लेड है ना, तो उसी में होता है ना, तो पूरी रात फिर बैठना पड़ता है. उस एक दिन होता है, फिर पूरी दूसरे दिन वॉमिटिंग ये होके पित्त निकल के. हाँ, वो सपोर्टिव चीज भी आपको बता देंगे इनिशियली टू टेक सपोर्ट, बट वो जड़ से खत्म हो जाएगा. उसके बाद ये भी रिजॉल्व हो जाएगा. षडांग प्रतिष्ठा इज द प्रोग्राम. पुट डाउन द नंबर. कोई भी और जो है वो कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन पुट डाउन ये नंबर इन द चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए. अच्छा, तो मुझे वो दूसरा प्रोग्राम ज्वाइन करना रहेगा. हाँ,
अच्छा, आपको नंबर और गाइड मेरा कर देंगे, नाम। आपको गाइड कर देंगे। हाँ, आप अपना नंबर नीचे डाल दीजिए चैट बॉक्स में, तो somebody Okay. will call you up and guide you. ओके ओके गुरुजी। ओके, तो एसिडिटी और पित्त का भी ये इसमें हो जाएगा सॉल्यूशन? हाँ हाँ हाँ, ओके, वो थैंक यू सो वो मच भी हो गुरुजी, जाएगा, तो धन्यवाद। हम जो कोर इश्यू है ना उसको एड्रेस। ओके, धन्यवाद। Nemani Bala ma'am, can you please unmute and ask your question? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स तो अभी बताया मैंने। वेरिकोज वेन्स जो है, देयर इज अ फैक्टर इन योर बॉडी कॉल्ड एज व्यान वायु। व्यान वायु, इफ इट इज नॉट राइट, then you'll see deformity in the structure of your body. So Vyana Vayu also is responsible for the pressure aspect of your body. So because of that pressure aspect, the valves in the vein is not functioning properly. Vein में ना valves होते हैं, उससे blood flow नहीं एक ही direction में होता, वो ठीक काम नहीं कर रहे। बहुत लोगों का वेरिकोज वेन आराम से निकल जाता है। ये ज्वाइन द प्रोग्राम, आपका चला जाएगा। ओवरवेट भी हूँ और वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है। वेट जाएगा आपका, चिंता करने की बात। वेट तो कॉमन है, जो भी कर रहा है ना, वेट उसका जाना ही जाना है, निकलना वही जाना है। एंड आई हैव ए प्रॉब्लम, मैं इन पर्सन कैन आई टॉक टू यू? प्रॉब्लम you put down your number. I think you have put down your number. Somebody will get in touch with you and you tell your problems. फिर हम देखते हैं कि if you need अगर ऐसा जरूरत होगा मैं 2 मिनट में बता देती हूँ कि ऐसा होता है कि मैं आई एम ए पर्सन गेट अप अर्ली। 4 बजे उठना अच्छा लगता है, 4 साढ़े 4 के अंदर उठ जाती हूँ। बट ऐसा हो रहा है कि ये मेनोपॉज के बाद मैं उठ नहीं पाती हूँ, जबरदस्ती 6 बजे। हाँ, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, हाँ डिस्टर्ब हो जाता है, आपका हार्मोन बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है। सो ये प्रोग्राम उसको हैंडल करेगा, उसकी चिंता ना कीजिए। आप जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, you'll be more in control. तो मूड स्विंग्स की बात नहीं है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट जबरदस्ती करती हूँ। उसके पीछे तो और भी रीजन, काम करने का आपका अभी मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना, वो वीकर साइड में है। तो जैसे ही ये प्रैक्टिस करेंगे, वो देखेंगे कि आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के लिए काम करना, सबको खाना बनाना खिलाना अच्छा लगता है, बट ऐसा स्टेज होता है 2-3 महीने ऐसे रहते हैं, करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। एंड वन फाइन डे गेट अप अर्ली, उस दिन से पूरा अच्छा करने का होता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहता। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। So this is the program I have to join. Yeah. If you join the program now, these things will easily be. These are very easy to take care of things. Not very difficult. Sorry, Swamiji. Komal ma'am, you can ask your question. This will be the last question. Rest of the people whoever wants to ask a question, they can put down their question in the chat box or put down their number. Somebody will get in touch with them. Hello, sir. Namaste. नमस्ते सर। नमस्ते जी। आई एम वेरी थैंकफुल, आज आपने बहुत ब्यूटीफुल सेशन लिया, बहुत अच्छा समय हमारा गया इसमें। मैं एक हीलर हूँ, आप जो बता रहे थे उस इसमें बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, जो आप कनेक्ट करवा रहे थे, क्योंकि मैं भी समझती हूँ एनर्जी लेवल क्या होती है। मेरा एक क्वेश्चन था, जो लोगों को हॉट फ्लैशेस आते हैं बॉडी में, पेल्विक रीजन में, उसकी वजह क्या है सर? ये इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में इसका मेजर रीजन इज लिवर। द मेजर रीजन फॉर दैट इज लिवर डिस्फंक्शन। लिवर डिस्फंक्शन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज वी आर बॉम्बार्डिंग लिवर विद सो मेनी अनवांटेड थिंग्स। आई थिंक दैट पेशेंट इज हाइपोथायरॉइड, ही इज अ थायराइड पेशेंट। That thyroid is also due to liver. Thyroid is not due to thyroid. Exactly sir, exactly. तो आपका थायराइड में क्या होता है? T4, it is tetrahydrothyronine. It converts to T3, trihydrothyronine.
which is a usable hormone. आपका body T3 यूज करता, T4 is a buffer, so T4 Yes, gets converted to T3 in liver. Yes, sir. Yes, sir. So thyroid issue is also due to liver dysfunction. And the hot flashes and pelvic region hot flash is also connected to liver, sir. Yes, it is connected to liver. Sir, I'm very तो happy. I will दोनों का join. पॉइंट एक ही है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, I तो would पॉइंट love to एक ही join. है. शुरुआत में Your question is there, sir. Sorry, I'm interrupting you because of time. I want to know that we'll get the certification of this, sir, that we can train others also. If you want to do something in this area, once again, first of all, you'll have to connect with us through a program, and then we'll see how we can induct you or help you take it to people. है ना, उसके बाद देखेंगे. पहले तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. अगर प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम ठीक कर लीजिए, and then become a messenger. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you, sir. So with this, we have come to the end of this webinar. If you still have question, you can put down your number. अपना नंबर छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में. कोई ना कोई आपसे टच में आके आपसे बात करके आपको संतुष्ट कर लेगा. अगर आपको समझ में आता है तो you can join the program and get benefited. आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रोग्राम में आने का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. Thank you so much, Swamiji. Good night.